पट खुल गए, महाराज आ गए हैं, दर्शन ले लो महाराज जी के। हेलो वेल आज का वीडियो होने वाला है कि अभी हम यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं इंदौर के लिए. सो दिस इज द पार्ट 2 बिकॉज यहाँ से हम इंदौर जाएंगे विच इज़ अराउंड 450 किलोमीटर्स. विल टेक अ डे स्टे ओवर देयर और उसके बाद में हम उज्जैन के लिए जाएंगे महाकाल के दर्शन के लिए. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट द प्रोफेशनल साइड ऑफ मी. इस वीडियो में वी विल डिस्कवर द रिलीजियस साइड ऑफ मी कि हाउ डिड आई end up believing in something and then what all things I could see happening around me, and so I guess it will be fun to listen or let's see how it goes. Well, अभी हम दो गाड़ियों में यहाँ से जाने वाले हैं. एक गाड़ी में मैं, पापा, सानू और नेहा रहेंगे और दूसरी गाड़ी में मम्मी, भाभी, भैया और मल्हार. तो yes, that is how we are going to go. Diwali was awesome. एंड एज यू कैन सी कि मेरा गला ख़राब हो चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मे बी स्वीट्स और थोड़ा सा इधर उधर सर्दी भी है बट मज़ा आएगा. लेट्स सी. सो सी यू इन द वीडियो. सदानंदाचा उदो उदो आज कत्ती आहे तू बाबाची. ओ माय गॉड. ब्रश कसं करते ए विदाउट टीथ ब्रश, विदाउट टीथ. अरे नाही चालले ते कुठे बघ बाई. तो गाड़ियाँ हो रही है लोड. ए मोगली क्या है वो? कोम्बुचा. शिवीने द्यायची रे. अच्छा, कोम्बुचा सच्ची लिखा है. वो देखो अब अंदर. तो फाइनली लेट अस स्टार्ट टॉकिंग. अब गॉड जी का एंट्री बहुत बचपन में हुआ था बिकॉज एज ए यंगर चाइल्ड है ना, तो बड़े भाई का काम है डराना, तो छोटे भाई का काम ऑफकोर्स बनता है डरना. तो हर भूत की कहानी से, भूल भुलैया मूवी से, ऐसे सारे चीज़ों से मुझे डराया गया था. बट दैट केम टू द रेस्क्यू हनुमान जी बिकॉज डैड ने हनुमान जी से इंट्रोड्यूस करवाया. सेड कि रात को सोते समय रोज बजरंगबली का नाम लेके सोना और कोई भूत परेशान नहीं कर सकता. तो उस दिन से आज तक की ये आदत है. ऑलमोस्ट अभी लाइक आई एम 25-26 तो 24 साल की तो आदत है ये कि मैं सोते समय बजरंगबली का नाम लेके सोता हूँ. दैट इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू गॉड. उसके बाद में इंसिडेंट्स हैपेंड लाइक व्हेयर आई यूज्ड टू फील लो या फिर आई वाज लुकिंग फॉर कि ये होता क्या है एग्जैक्टली. जब मैंने रामायण देखा टीवी पे पहली बार या फिर हमने जो सबने कॉमिक्स में देखा है एक एनिमेशन वाला रामायण था वो वाला देखा तो आई गेट वेरी मच फैसिनेटेड कि यार इतना सब कुछ रियल में था बिकॉज यू नो दे वर रियली पावर्स, एक्चुअल पावर्स दैट पीपल हैड. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने उसके बारे में पढ़ना चालू किया. देन वाज द एंट्री ऑफ महाभारत इन माई लाइफ. So I got interested in that because again it was the more dramatic and yet everything was connected into that. So you know I used to love the way that things were connected. कि जैसे हम कर्मा को एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही कि आपके इस लाइफ के पुण्य और पाप पिछले लाइफ के पुण्य और पाप से कैसे अटैच होते हैं. That is how I got too much interested in this. और मैंने पढ़ना चालू किया, YouTube पे देखना चालू किया अलग अलग वीडियोस को. I used to follow a lot of saints जो ये सारे स्टोरीज बताते थे. I used to get too much fascinated by these stories because ये सब कुछ connected था and it felt so good after reading those things. The power that you know internally जो आपको power feel होता है वो वाला. So that is how I got more and more interested. And then as I grew up, so I learned about manifestation, and then I understood that you know you can actually manifest a lot of things in your life, and and that is very close to God's helping you. So that was again a part that I became more interested in it.
मल्हार। अब ये सब चीज़ें होते हुए एवर सिंस माई चाइल्डहुड मॉम डैड ने हमेशा एक ही चीज़ बताई थी कि भगवान को दिल से मानो और वॉट एवर यू डू यू नेवर चीट समथिंग, दैट इज़ हाउ यू प्रेज गॉड। तो मैं जब नॉनवेज खाने लगा व्हेन आई केम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री आई ऑलवेज हैड दैट इनसाइड में कि यार मैं मन से कभी किसी का बुरा नहीं चाहता ऑनेस्टली, और भगवान को मैं दिल से लाइक आई वर्शिप हिम। इट्स नॉट आउट ऑफ फियर, it's out of my heart that I really believe in them, and I just love the part where he is supporting me. So that is why I never focused on being a vegetarian exactly. फिर उसके बाद में I got my tattoos, which was first tattoo was the Mahamrityunjay mantra written on my shoulder. The meaning of Mahamrityunjay mantra was very much fascinating to me, and the sound of Mrityunjay mantra was very much fascinating because I was always a musician. So the way it sounded when we used to play it, so those vibrations were too much that I was attracted to. उसके बाद में हनुमान चालीसा. So the second tattoo, the third tattoo actually that I got was of Hanuman Chalisa's 36th shlok. Okay, so these things always attracted me, but no कि एक जो दिमाग में था कि आप चाहे कैसे भी ये करो, अगर आपका मन साफ है तो God will accept you. Then I used to hear stories that there used to be a person who is living in a jungle, or he used to offer meat to Lord Shiva and he used to accept it. So ऐसे कुछ stories थे जो मैंने सुने थे. So I was always with me कि हाँ ठीक है, मतलब सच्ची ये चीज़ें काम करती है और आप दिल से मानो. और that is how I was making comfort with whatever I was eating. And I was still worshipping Lord Shiva's the OG serial Devogadev Mahadev was the actual entry point of Lord Shiva in my life, because the way the actors made that serial was very much fascinating. The powers and the sloks, everything used inside it, the music was so good कि मुझे और पढ़ने के बारे में इच्छा हुई. फिर उनसे रिलेटेड ही सब कुछ था, ये चीज़ मैं पढ़ने में और इंटरेस्टेड हुआ. और उसके बाद में अराउंड दिस ईयर जब मल्हार को एडमिट किया था, सो मल्हार आपने पता ही है आपको मल्हार कौन है, तो तब मुझे ऐसा हुआ अंदर से मेरे एक फीलिंग आई कि यार इफ आई एम डूइंग सो मच फॉर लॉर्ड शिवा और हमारे घर में भी मल्हार है, तो एक ही चीज़ है, एग्जैक्टली एक ही चीज़ है जो मेरे और लाइक वी कॉल इट की 100% कनेक्शन के बीच में आती है, जहाँ मैंने खुद को कन्विंस किया एंड दैट इज़ माई नॉन वेज ईटिंग. तो दैट वाज द फर्स्ट क्लिक. और जिस दिन वो क्लिक हुआ आई बिकेम वेजिटेरियन अगेन, विच वॉज आफ्टर 5 years ऑफ ईटिंग नॉन वेज एंड एवरीथिंग. उसके पहले वेजिटेरियन था बट बिकॉज ऑफ टेस्ट इशूज. बट इस बार आई बिकेम वेजिटेरियन फॉर माई रिलीजियस पार्ट, and honestly I feel so much healthy. I feel so much healthy after shifting to complete vegetarian, because अब मेरा रूटीन के अंदर 1 घंटा मंदिर में रह के बैठना है, enjoying those vibrations. और अभी जैसे दिल पे इच्छा है कि I should go and worship all the temples of Lord Shiva. So here we are on the journey to Ujjain. So this was my introduction to God. हमारे गाड़ियों का एडजस्टमेंट ऐसा था कि हमारे गाड़ी में एक सुपरवाइज़र रहेंगे, विच इज़ माई डैड. तो पापा को दिखाओ सुपरवाइज़र.
We have a mini family get together under this bridge. ये है हमारे भाभी के मॉम डैड पेरेंट्स एंड वो आए हमें यहाँ मिलने. We are waiting. Our one kid is already sleeping. If you can see, other kid is there watching birds. Forcing kids for love. इंदौर चालू हुआ नहीं कि आलू पराठे. It's still 50 kilometers और थोड़ी yes इस पूरा अंधेरा हो गया है. क्या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है. ओके अभी आई जस्ट आई वाज ऑन लाइन और गाड़ी एकदम से अचानक से हेवी हो गई थी. So that was bit spooky for me because मैंने कभी ऐसे इस पे ड्राइव नहीं किया है. तो मज़ा तो आया है पर